लाइव चल रहा है, लिंक क्यों नहीं आ रहा बता नहीं हम। तो बसें चल जाएंगी, तो 4 बजे स्टाफ को छोड़ दो, बोले मैं तो बस जा रही है, मैं कैसे जाऊँगा। पहले चेक करेंगे चीज़ें। आकर के इसको हाँ है तुम्हारे भी ये ठीक है हाँ Good morning, all of you. Good morning, Dennis. So we Innovators 3D have built this model of fake news as we have selected this problem statement of misinformation crisis. आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेक न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है
क्योंकि अभी जैसे सबको पता है कि वॉर चल रही है, तो हर छोटी चीज पे एक नई फेक न्यूज आ जाती है, कुछ नया वीडियो आ जाता है और कुछ आ जाता है। तो हमने ये प्रॉब्लम देखी कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट आइडिया चूज किया। तो हमने क्या किया है, हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल में किया है जो ऑनलाइन लर्निंग पे काम करता है, जिसमें हम जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उनसे डेटा स्क्रैप करते हैं और उसके बाद हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं। इसमें एक्चुअली हमने एक बार मॉडल ट्रेन कर दिया, उसके बाद हमको कोई भी एक्स्ट्रा मैनुअल एफर्ट्स नहीं लगाने बार बार मॉडल ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जो भी करंटली न्यूज अपडेट हो रही है, हम करंटली वो न्यूज ट्रस्टेड वेबसाइट से उठाते हैं, हमारे मॉडल जो प्री ट्रेन पड़ा है उसको वापस ट्रेन करते हैं और उसमें हमारा मैनुअल एफर्ट नहीं है। ये पूरा पाइपलाइन है जो हमने कोड के थ्रू लिखी। हमने क्लास को यूज किया है इस वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, और हमने इसके साथ एक एक्सटेंशन रखा है ताकि यूजर को किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े। वो जिस भी ब्राउजर को यूज कर रहा है और जिस भी वेब पेज पे है वो वहीं से उस न्यूज को चेक कर ले, या रील्स हो, स्क्रॉल्स हो, या कोई भी पोस्ट हो, ट्वीट्स हो, वो आप वहां से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ये हमारे मॉडल का वर्कफ्लो है, जिसमें इनिशियली जो भी यूजर का एक्सट्रैक्ट डेटा है टेक्स्ट से, हम उसको इनपुट देते हैं, उसके बाद वो हमारे मॉडल के पास आता है, वो उसमें प्रेडिक्शंस लेता है और डिस्प्ले करता है कि वो फेक न्यूज है या रियल न्यूज। ये हमारे मॉडल की पाइपलाइन है, जिसमें हमने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग एनएलपी वगैरह यूज किए। उसके बाद हमने जो मॉडल यूज किया है वो पैक है, पैसिव अग्रेसिव क्लासिफायर, वो टीएफ-आईडीएफ को यूज करता है, जिससे अभी तो हम इनिशियली पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ट्रू न्यूज और फेक न्यूज का। उसके बाद हम सिमेंटिक मीन पे जाएंगे, सीएनएन और दूसरे मॉडल्स। और उसके बाद जैसे वो हम कुछ भी डालते हैं, तो जो भी है हमारा टेक्स्ट प्री प्रोसेस होने के बाद हमारा मॉडल उसको क्लासिफाई करता है कि ये रियल न्यूज है या फेक न्यूज यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ये हमारा एक्सटेंशन का वर्कफ्लो है कि अगर यूजर किसी भी वेब पेज पे है तो वो एक्सटेंशन के थ्रू हमको जो अपनी टेक्स्ट है न्यूज है वो डाल सकता है। उसके बाद वो हमारे मॉडल की तरफ ही चेक होगी और वो वापस बता देगी कि है। ये हमारे प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें रियल टाइम डिटेक्शन है। आप किसी भी वेब पेज पे हो, कोई भी न्यूज हो, आज की या पुरानी कुछ न्यूज जिस पे हमने डेटा सेट अभी ट्रेन किया है, वो सारी न्यूज पे एक परफेक्ट प्रेडिक्शन देता है। और जिस भी सेकंड पे न्यूज अपडेट होती है, जैसे इस भी पॉइंट पे अगर न्यूज अपडेट हुई है तो हमारा मॉडल क्या कर रहा है, वो रियल टाइम पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे बीबीसी में न्यूज अपडेट होगी, हमारा मॉडल उस न्यूज के लिए भी ट्रेन होता रहेगा। तो इससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी ओवर द टाइम इंक्रीज करेगी, जो कि और मॉडल्स में बैच ट्रेनिंग होती है कि एक हफ्ते के बाद वो लोग वापस उस ट्रेन डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको वापस ट्रेन करते हैं। लेकिन हमारा मॉडल कंटीन्यूअस रियल टाइम पे वो डेटा स्क्रैप करके ट्रेन करता रहता है मॉडल, और ओवर द टाइम उसकी एक्यूरेसी और ट्रस्टेड होता है कि बार-बार यूजर को ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार अभी न्यूज़ फेक बता रहा है, बाद में रियल बता रहा है। वो रियल टाइम पे ही कैच कर लेता है कि न्यूज़ रियल है या फेक। तो हमने इसके लिए कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट जैसे बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इसको ट्रस्टेड रियल न्यूज़ के लिए लिया है। और फेक न्यूज़ के लिए जैसे प्रोमिनेंटली वॉर्स है, तो उनमें reuters.com, newspunch.com, ये कुछ फेक न्यूज़ प्रमोट करने वाली वेबसाइट्स हैं। उनको अभी फेक न्यूज़ के लिए आपने एज वो ये है कि अब ब्राउजर के साथ हमने एक्सटेंड ब्राउजर के साथ इसको इसलिए इंटीग्रेट किया है कि यूजर को बार-बार प्लेटफॉर्म चेंज ना करने पड़े। जैसे इनशॉर्ट्स है, अब उसके लिए आपको इनशॉर्ट खोलना पड़ेगा, न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई भी वेब पेज पे हो और आप ये देखना चाह रहे हैं कि न्यूज़ रियल है या फेक है, ट्वीट्स रियल है या फेक है, पोस्ट कुछ भी है उसके अंदर टेक्स्ट है वो रियल है या फेक है, तो आप डायरेक्ट हमारे एक्सटेंशन पे डाल सकते हैं, वो वहीं से प्रेडिक्शन बता देगा। और उसके साथ हमने एक चीज और इंटीग्रेट करी कि वो एक्सप्लेन भी करेगा ऐसा क्यों, और वो कॉन्फिडेंस भी बताता है। अगर उसको न्यूज़ ट्रेन नहीं है उसमें, तो इनिशियली तो वो बता देता है कि वो अनसर्टेनिटी है कि अब ये रियल फेक को क्लासिफाई नहीं करेगा, लेकिन
हम डेटा सेट कलेक्ट कर रहे हैं, वो कलेक्ट करने के बाद हम उसको उस पर ट्रेन कर देंगे, उसके बाद वो अनसर्टेनिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। ये हमारा कुछ टेक स्टैक है, जैसे पाइथन और साइकिट-लर्न की कुछ लाइब्रेरीज हमने यूज करी थी और HTML CSS हमने फ्रंट-एंड के लिए यूज किया। ये हमारे उसका UI है, जिसमें ये हमारा फर्स्ट वेब पेज है। यहाँ से हम डेटा न्यूज पेज से प्रेडिक्शन पेज पे जाते हैं और प्रेडिक्शन पेज पे आप जो भी डालोगे उसके लिए वो प्रेडिक्शन करेगा। ये हमारा एक्सटेंशन का टैब है, जिसमें ये ब्राउज़र के साथ कनेक्टेड है। आप जैसे एक्सटेंशन को क्लिक करोगे वो यहाँ से ही आपको बता देगा वो न्यूज़ दे रहे हैं। हमारा फ्यूचर स्कोप ये है कि हमने सोचा है, अभी तो ये टेक्स्ट पे काम कर रहा है, हम इसके साथ यूजर को डीप फेक, इमेजेस, वीडियोस या जितनी भी सारी चीजें हैं उसके साथ भी इंटीग्रेशन करके क्योंकि रिसेंटली हर चीज में किसी से कोई प्लेन क्रैश होने के वीडियोस आ जाते हैं, वो डिटेक्ट अभी नहीं हो रहे, लेकिन ओवर द टाइम हम उसको डिप्लॉय करेंगे। साथ ही में अभी तो हमारा पैटर्न बेस्ड है, हम इसको सिमेट्रिक बेस पे ले जाएंगे जिससे वो उस टेक्स्ट का मीनिंग अंडरस्टैंड करके फिर उसको प्रेडिक्शन देगा कि ये क्या न्यूज़ है, कैसे है, सही है या नहीं है, और फिर रैप भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या करेगा, मॉडल जो पहले प्रेडिक्शन ले रहा है फैक्ट पे वो तो लेगा, फिर साथ में रैप क्या करेगा, जो न्यूज़ पाइपलाइंस है मतलब न्यूज़ चैनल्स है वहाँ जाके रियल टाइम में न्यूज़ चेक करता है और कंपेयर करेगा कि ये वाली न्यूज़ और ये वाली न्यूज़ कैसे काम करेगी। फिर वो साथ में इंटीग्रेट करके जो भी पावरफुल कॉन्फिडेंस देगा उस बिहाव के लिए वो बताएगा कि ये न्यूज़ रियल है या फेक है। और इसमें एक्चुअली क्या है, हमारा मैनुअल एफर्ट देंगे, जो भी कॉस्ट हमको लगेगी वो सिर्फ कंप्यूटेशन पावर लगेगी, क्योंकि मॉडल खुद ही न्यूज़ एक्सट्रैक्ट करता है, खुद ही पूरा प्री प्रोसेस ट्रेनिंग वगैरह सारा करके और वापस मॉडल को ट्रेन करता है। तो इसमें नॉर्मल कंप्यूटेशनल पावर लगती है, बाकी और में हमको एक हफ्ते बाद मैनुअली बैच ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो वापस हम ले जाके ट्रेन करें। और यूजर को भी किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है तो उसका भी टाइम बचता है, उसका भी ट्रस्टेड होता है। ओवर द टाइम हम इस पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एड्स भी दे सकते हैं, स्पॉन्सरशिप मतलब जो भी है उससे हम इस मॉडल से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स? एनी क्वेश्चंस? Sir, this is our website. We have just improved the UI. जैसे ही टेक्निक्स पे हमने क्लिक किया इस पेज पे आ जाते हैं और उसके बाद सर ये हमारा एक्सटेंशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं यूज चेक। सर ये इसने डिटेक्ट कर दिया रियल यूजर, कॉन्फिडेंस भी आता है और अभी रियल टाइम पे बीबीसी की लाइव न्यूज़ थी जिसको इसने डिटेक्ट किया है, तो इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे मतलब टाइम नहीं लगता कि आप बार बार कहीं और से देखो, ये रियल टाइम पे चेक करके। Hello. So
currently, how many websites real use you can enter to that? Is there any limitation on any website I can check? सर मैम किसी भी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी इनिशियली कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स लिए कि वो पैटर्न्स अंडरस्टैंड कर पाए रियल यूज के So, how many those platforms? मैं बता सकता हूँ। वैसे तो क्या है मैम 10 to 12 real platforms, real websites and 10 to 12 fake news community websites. So, any priority given to them or it's Initially no priority is decided, but over the time हमको जैसे जिस पे पता चलता है कि ये न्यूज़ चैनल मोर मतलब ट्रस्टेड न्यूज़ फॉलो कर रहा है या ज़्यादा फेक न्यूज़ कर रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। So how many those platforms like in English and in Hindi? Both. इनिशियली हमने पहले तो इंग्लिश ही रखा था, लेकिन फिर हमने हिंदुस्तान टाइम्स और सारी चीज़ें जोड़ी है जो अभी तो इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर देंगे हर लैंग्वेज के लिए, इसको सपोर्ट करेंगे। Yeah, because somewhere I feel if you are developing this for India, so because we are using Hindi newspapers, so is this consideration? इसमें जो गूगल स्पीच है वो काम करता है, Okay. तो So can you use any Indian newspaper or Hindi newspaper and use that? वो जैसे गूगल स्पीच में हम बोलेंगे वो टेक्स्ट ट्रांसलेट कर लेगा। अब क्या है Like you consider here currently BBC, right? So any other Hindi website newspaper you can use it. मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ थी और उसमें डिलीट किया। एक्चुअली अभी क्या है कि हिंदी में हम ट्रांसलेट करने का ऑप्शन डाल देंगे, अभी करवा देंगे। Thank you. थैंक यू सर। ये जो आपने इसमें बताया कि कुछ जो फ्री वेबसाइट्स हैं उसको आपने हार्ड कोडेड अभी दिया है एज ऑफ यस बट एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने वर्कफ्लो बनाया था इसके बेसिस पे वो उसको करेगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू लाइक क्रॉल डेली कम्स ऑन क्रॉल वेबसाइट में कोई भी वेबसाइट आती है, तो आप इसमें कुछ क्रॉलर ऐसा कुछ लगा रहे हैं आप जिसको आप डेली को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका यूआरएल आ रहा है नहीं। फीचर्स को क्या कि वो जो न्यूज़ चैनल्स प्रोमिनेंटली आएंगे वो हम इसमें ओवर द टाइम वो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करेगा वो न्यूज़ चैनल्स जो भी लिस्ट होंगे और वो फेक न्यूज़ वाले में ऐड कर देगा। और इसमें सर एक चीज़ और है कि जब ये फेक और रियल न्यूज़ को उठाता है वेबसाइट से तो सेम नंबर ऑफ सैंपल्स उठाता है। जैसे अगर रियल के 174 सैंपल्स उठाएगा सेम टाइम पे 174 फेक न्यूज़ उठाएगा, इससे बायस डिसीजन नहीं कि वो फेक के ज़्यादा बता रहा है या रियल के ज़्यादा बता रहा है, कि कम्युनिटी रियल ज़्यादा चेक करने का मतलब। तो ऐसा ना आप ये कह रहे कि अगर मैं कोई वेबसाइट बना देता हूँ और उस पर मैं अगर एक फेक न्यूज़ डालता हूँ तो वो आपका 174 टाइम्स फेक को भी लिखेगा और 174 रियल को भी लिखेगा। अगर उसके न्यूज़ वो अभी जैसे रियल टाइम पे उठा रहा है तो जितनी भी 5-10 वेबसाइट 15 वेबसाइट जो भी लिस्टेड है उसमें से वो सारी न्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेगा, यूनिक न्यूज़ कॉमन न्यूज़ नहीं। वो यूनिक न्यूज़ क्या करेगा वो एक डेटा सेट में ले जाएगा, स्टोर कराएगा विद सैंपल्स विद लेबल्स कि ये रियल न्यूज़ के लेबल्स हैं ये फेक न्यूज़ के। उसके बाद वो सेम अमाउंट होगी, अगर 174 रियल न्यूज़ के लेबल्स के साथ है 174 फेक न्यूज़ की होगी। उसके साथ जब वो ट्रेन करेगा तो बायस डिसीजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि अब ये पैटर्न पे काम करता है। जब ये सिमेट्रिक मीनिंग पे काम करेगा तो हम फिर उसमें और चेंजेस लाके ये कर देंगे कि फेक न्यूज़ के पैटर्न्स या वेबसाइट से ही हम ये डेटा कलेक्ट करना चालू कर देंगे। अभी क्या है हम ओवरराइड कर रहे हैं डेटा। बट इसमें अभी तक मुझे ना कॉन्फिडेंस लेवल तो लिखा है लेकिन पब्लिश डेट ऑथर सोर्स वाले कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, जिससे कि मैं जानवर इसको कैसे मानूंगा वो मुझे समझ नहीं आता। 100% कॉन्फिडेंस इज फाइन या 80% इज फाइन, लेकिन कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है वो मुझे नहीं दिखाया इसमें अभी तक। सर वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हम यूज़र को सिर्फ प्रिडिक्शन दे रहे हैं, अभी उसको हम ये नहीं बता रहे कि ये कहाँ से हमने बताया है। सोर्सेज हमने हमारे लिस्ट कर रखे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कि हम यू शुड ऐड ताकि यूजर को लगे कि जेन्युइन है। डेफिनेटली विल ऐड सर। थैंक यू सो मच सर।
So guys, you have only 5 minutes for your pitching. Please अपनी टाइम लिमिट से एक्सीड मत करो. सिर्फ 5 मिनट आपके पास आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. Now I would like to call team number table number 055 Hack Crackers, and they will be joining us through online. Good morning, all judges. We have been attracted and today we present our project, Arya, and AI-powered smart healthcare system. Basically, we run on the problem segment. In today's healthcare system, we basically tackle few things. Just like we have fragmented patient records, long time waiting in a queue for getting our number to meet the doctor spending excessive amount of time to get access to the patient medical history and emergency for a patient for a person with an accident. The doctor get access to the patient अगर उसे जैसे बीपी की प्रॉब्लम है जैसे शुगर की प्रॉब्लम है तो वो उसे जानने में टाइम लगता है उसका क्या है वो उसे जानने में टाइम लगता है उसके लिए हमने इसे हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है जिसमें क्यूआर से वो सारा उसका जो जानना है वो एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद हमने इसमें एआई इंटीग्रेट किया है जैसे अब कोई भी डॉक्टर उसमें अवेलेबल है उसके सिम्टम के बेसिस पे तो वो हमें बता देगा Great, so much. I don't have 3 mics right now, so next side.
सो बेसिकली मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम किया, जैसे फ्रेगमेंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स जो मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर प्रेजेंट होते हैं, हमने तीनों को कनेक्ट किया है प्रोजेक्ट में। सेकेंड थिंग इज इनएफिशिएंट अपॉइंटमेंट सिस्टम। जो अपॉइंटमेंट होता है, कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग पेशेंट को डाटा मिलता है, पेशेंट उस अकॉर्डिंग से बुक कर सकता है। उसके बाद मेडिकल एक्सपीरियंस, टाइम पे जो मेडिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर का जैसे कोई पेशेंट जा रहा है तो कई बार होता है कि वो अपना पास्ट जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं पुराने हॉस्पिटल वो कैरी नहीं करता है साथ में। तो हमने इसमें AI इंटीग्रेट किया है, जिससे जो डॉक्टर है वो समरी जनरेट कर सकता है पेशेंट की पास्ट रिकॉर्ड के। और जैसे इसमें इमरजेंसी क्रिटिकल टाइम लॉस, मतलब अगर पेशेंट का मैंने बताया एक्सीडेंट हो जाता है तो सारा रिकॉर्ड तो हमें मिलता है। मैं आपको भी प्रोजेक्ट शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे पेशेंट ने लॉगिन किया, हमने इसे वर्चुअल और टेंडर पे डिप्लॉय किया है। टेंडर पे बैकएंड डिप्लॉय किया और वर्चुअल पे फ्रंट एंड डिप्लॉय किया है। सो जैसे पेशेंट का आ गया, पेशेंट के पास आ गया, उसे कहाँ पे अपॉइंटमेंट है वो आ गया, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इसके पास आ गया, पेशेंट के पास, ठीक है। और जैसे मैंने जो इसमें चैटबॉट इंटीग्रेट किया है, जैसे अगर मुझे भी हर रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे आर्या डिश में, तो यहाँ पे उसे सारा आ जाएगा कि जैसे उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके करेंट सिम्टम के बेसिस पे, और जो भी डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल रहेगा, जो भी डिपार्टमेंट है उसे जानना चाहिए, वो उसे आ जाएगा। और जो QR का मैंने बताया था, स्मार्ट QR का, जिससे वो इमरजेंसी एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक QR शो होगा जो उसे वो कैरी कर सकता है अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में। जैसे उसके ब्लड ग्रुप शो हो सकते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज है उसको चीजें तो, और जैसे हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना है, हमें जैसे कोई हॉस्पिटल मान लेते हैं, जैसे सिटी हॉस्पिटल हमें बुक करना है, हम बुक कर दिया। यस मैम, एप्लो हॉस्पिटल की है, सेम ऐप है, बट जो फीचर्स हमने दिए उसमें नहीं है। उसमें जैसे फ्रेगमेंटेड रिकॉर्ड्स को लिखा है जो एडमिन्स होते हैं डॉक्टर और हॉस्पिटल को कनेक्ट करने के लिए, बट हमने जो चैटबॉट इंटीग्रेट किया उसका स्मार्ट क्यूआर सिस्टम रखा है, और जो डॉक्टर AI से समरी जनरेट कर सकता है वो नहीं है उनके पास। हाँ जी सर। पर्सन ये है ना कि जैसे ब्लॉग का जैसे हमने यूज किया है, ब्लॉग में होता है जो लाइव चलता है, लाइव इसका में क्या है कि वो लाइव एक्सेस होता है, ब्लॉग के बाद जो डिटेल्स आती है ना वो लाइव चलती है। और चैट ना इतना इस टाइम में नहीं होता, जैसे ब्लॉग है उसको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलता रहता है। यस हाँ, जैसे हमने जैसे अपने एमएल मॉडल को ट्रेन करके भी देखा था सर,
तो ट्रेनिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसको पुश करना था उस टाइम पे, बट हैकेथॉन के लिए 24 आवर की थी तो हमने उसे अकॉर्डिंगली किया था। थैंक यू। Now I would like to invite Qubit, table number 011. Please come on the stage. Qubit, table number 011. Hello sir, hello ma'am. This is Team Qubit presenting our product Qubit Autonomous Defense System. It detects, identifies and neutralizes the target and with zero human intervention. So the major problems like when a soldier is there on the front line on the border, the chances of his or her casualty increases by 80%. And there is an increase in intrusion rates, that is illegal crossing of borders, by 38% from 2014 to 2025. It's according to the government-based data. And due to misdetections, there is an increase of 20% rate. Like out of these 38%, 20% are due to human fatigue, that is human errors. And as we all know that AI is way more, like the response rate of AI is way more faster than a normal human being. It's around 10%, 10 times faster. So these are the major problems. And this is our solution, which is Qubit. So basically, I can explain the working of our project in 5 basic steps. First of all, the BOSS thermal. BOSS stands for Border Surveillance System. It is a integrated system of different cameras which is currently used by Indian Army for border surveillance. It's basically a camera which uses thermal vision
for detection of intruders. And as we will integrate this product with the border defense system, the BOSS, and it will detect the target, and after that it will recognize it, whether it's an intruder or not. After that, the motors will work and let this gun aim on the intruder, and then it will utilize the target. All this event, like from aiming to shooting, all this event will be recorded for evidence, and secondly, we will use all these recordings for training our ML. Just give us 5 minutes, we will start with the demo. So basically what's happening over here is that we are using this camera as a surveillance system. Now secondly, what happens, you can see over there, we have recognized person, like Vansh is a recognized person. So it won't shoot Vansh, it will fire at us because we are intruders. It will detect us as we are not recognized persons who can enter and infiltrate an area. Let's suppose we are using this on a border defense system, alright? So there is a battlefield and there are person A and person B at the other side of the border, and they approach our restricted areas. So basically, let's suppose person A is a armed person which is representing our country. He will be tagged with an RFID system which will be located in the geo mapping of the area. So whenever the person enters the critical range, the geo mapping will show that person is a recognized person even if he is far away. Secondly, at the night time, it will use thermal vision for that same thing because cameras won't be able to detect if the person is recognized or not. Secondly, if person at point B is not recognized, it will turn towards it and it will make an alarm. You can see there is an alarm. After warnings, we can shoot at site areas, we can fire and we can utilize the target. Basically, it won't shoot once, it's continuously in monitor mode currently. So the bunch is a recognized person. So you can see there, and secondly, let's suppose there is a malfunction. In the case of malfunction, what we can do is that we can pause the system and it will be in manual control. So we can control it manually. My question is why you choose this area, because it's difficult to get defense data and to analyze what was going on border. So how this thought comes in your mind that you choose this area, and how other things you calculated or how you get that information? Because currently, geopolitical situation, India doesn't have an autonomous system. Like you can see, US is using Anthropic and Israel. US is using Anthropic AI for the Iran bombing and all that. Alright. And secondly, we have seen Israel have a military system called Iron Dome, which defends its aerial space. So basically, we need an AI-based autonomous weaponized system which can reduce human life loss. And if we come about the data, we can collaborate with DRDO. Like all the data, if we integrate, we have filed this product, this project in DRDO as well. So, no, but I don't think you will get the data because this data is very sensitive. You will not get the data of faces of the person or the movements in the body. First. Second is after the intruder never comes in his own costume. Yes, sir. Intruder कोई आएगा तो different costume. First of all, border defense system पे कोई भी अगर border के उस तरफ से आएगा, तो वो हमारे लिए intruder है, हम उसको open fire पे रख सकते हैं. So we are planning to implement this on borderline. Borderline, yes. ठीक है.
एंड आपने एक RFID का जिक्र किया, RFID आप किस चीज़ के लिए उसको यूज़ ले रहे हैं? We are using it for geo mapping. Let's suppose the person which is around the border is our person. We do not want it to shoot that person, right? So to identify this person, we are using a GPS module kind of thing, which will be tagged with the uniform or within the person's bio-plan, something like that. We can work on that. ठीक है, लेकिन like as of now this is not working functional for faces because आप जिसे कह रहे हो आपका आंसर ये कि एंथ्रोपिक क्लाउड काम कर रहा है, बट द पॉइंट इज एंथ्रोपिक क्लाउड जो काम कर रहा है वो 100 में से 1 पे काम कर रहा है। आप जो काम कर रहे हो आप 100 पे नहीं, आप 1000 से लाइक आप बहुत रेडियस फिगर्स पे काम कर रहे हो, है ना? तो फेसेस का डेटा अलग से चीजें आना, इसको आप We want to using face data. The face data will be used while we are using this in embassy situations. Because in embassies, no one without facial recognition and all that data is collected at first at the table. When the person is entering the embassy, he has to be recognized by the system itself. So we can use it in that case. All right. Okay, all right. Good job, guys. Thank you. So now I would like to invite team name class and table number 016 and they will be attending online. Am I audible? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Let me just share the screen. So our problem statement was AI automation of digital marketing and cost optimization. So I choose this problem statement because I am a freelancer and I know important of my clients like small business उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो पैसा तो बर्न करते हैं बट उनको आउटकम नहीं दिखता है. Like
वो अपना खर्चा डाल रहे हैं, बट उनका पैसा बर्न भी हो रहा है और उनको टारगेट ऑडियंस से उनका फंड नहीं दे रहा है और उनको कोई आउटकम भी नहीं दिखता है, क्योंकि मेटा एड्स और फेसबुक एड्स पर नहीं चला पाता और उनके टारगेट ऑडियंस तक उनका प्रोडक्ट या सर्विस पहुंच नहीं पाता है। तो हमने एक ऐसा सर्विस बनाया है जो ये पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है। मेटा एड्स और गूगल एड्स को कंबाइन करके एक सिंप्लीफाइड डैशबोर्ड जहाँ पे आपका एआई से ऑप्टिमाइज एड्स चलता है, जिससे क्या होता है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अपना ऐड लगाने में मदद मिलती है। ये हमारा एक साइन पेज है, जहाँ से ये हम डैशबोर्ड पा रहे हैं। अब इस कमांड सेक्टर का पूरा अपना सारा भी चार्ट देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ हमारा एक साथ शो होता है। फिर मेटा एड्स और गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और हमारे यूट्यूब एड्स, सबका जो भी डेटा है कंबाइंड डेटा यहाँ से दिखता है, जो कि एपीआई के थ्रू फेच हो रहा है। यहाँ होता क्या है कि हम लोग अभी मेटा एड्स पे सिर्फ ऐड लगा सकते हैं, बट हमारे इस डैशबोर्ड या हमारे सर्विस के हेल्प से आप ऐड भी लगा सकते हैं और उसके साथ साथ क्रिएटिव्स भी जनरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप अपने कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे और ये लाइक सारी प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे इसके बारे में एक पोस्ट जनरेट करके मिल जाएगा एआई के हेल्प से। ये बहुत फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, एनवीडिया का एपीआई यूज हो रहा है इसके बैकएंड में। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कैंपेन चला सकते हैं अपने एड के लिए, जो कि बहुत सिंपलीफाइड है बिजनेसेस के लिए। एनालिटिक्स भी देख सकते हैं अपने बिजनेस का, कितना क्लिक रेट मिला है, कितना नहीं मिला है, कन्वर्जन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप बजट लगा सकते हैं अपने ऐड पे, कितना बजट चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ हमने एक फीचर ऐसा डाला है कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपको स्विच करना है, अगर आपका या कोई स्टार्टअप है और आपको एक स्टाइल में पोस्टिंग करनी है, लाइक एक डिजाइन में पोस्टिंग करनी है, बट आप अब इस ऐप पे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने सारे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं जो प्रीवियस पोस्ट है आपके सर्विस के, आपके ब्रांड के। यहाँ पे सारे फाइल्स को अपलोड करेंगे और यहाँ पे ट्रेड माई वॉइस करेंगे, तो आपकी ब्रांड डिजाइन के हिसाब से ही ये आपको कंटेंट जनरेट करके देगा और हर बार एक यूनिक कंटेंट जनरेट करके देगा, जिससे कि आपका कंटेंट एक सिमिलर डिजाइन पैटर्न को फॉलो करेगा। हम लोग ने ए बी टेस्टिंग में डाला हुआ है, यहाँ पे आप कोई चीज डाले समझ से तो ये क्या करेगा, ये एक ही चीज का दो ऐड लगाएगा, वो चेक करेगा कि कौन सा ऐड वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर जो ऐड वर्क कर रहा है उसको बूस्ट करेगा, जो नहीं कर रहा है उसके उस ऐड को फिल कर देगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी बजट करता हुआ है वो बहुत ऑप्टिमाइज रहेगा, बहुत कम पैसों में हमारा ज्यादा ऑडियंस रीच होगा। हम लोग ऐसे ट्रेंड्स में एनालाइज कर सकते हैं कि इस टाइम क्या ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, उसी को फॉलो करके हम लोग अपना पोस्टिंग कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर अपने कॉम्पिटिटर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स दे देंगे तो उसको एनालाइज करके कि अपने आप उनके टॉप परफॉर्मेंस पोस्ट को एनालाइज करके हमारे लिए पोस्ट जनरेट कर देगा। हम लोग यहाँ से ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी निकाल सकते हैं अपने लिए। और रीपर्पस एक ऐसा फीचर डाला है हमने, जैसे कि आपने कोई भी एक डेटा दिया है यहाँ पे, लाइक Okay, so I got the idea of what you have developed. I have a question: how this is different from another ads platform like Google ads platform, Meta? How is it different from that? करेक्टली गूगल और मेटा में क्या होता है कि आपको सिर्फ ऐड लगाने के लिए मिलता है और ऐड बहुत कॉम्प्लेक्स है उसमें लगाना। उसमें आपको इसमें हमने क्या किया कि बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे मैंने चैटबॉट डाला हुआ है, आप यहाँ पे सीधा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस ये है, मुझे ये ऐड लगाना है और मुझे ये कंटेंट चाहिए। ये सब कुछ आपको सिंपल तरीके से बना के दे देगा, आपको कंटेंट भी बना के दे देगा, आपको एड्स भी बता देगा कैसे चलाना है, कैसे कराना है। Okay, thank you. गुड जॉब, आपने अच्छा काम किया, ये काफी अच्छे से बनाई।
The only thing I found is इसमें मुझे कुछ मैपिंग नहीं दिखी है. मैपिंग कैसे कोई भी डैशबोर्ड को यूज करेगा तो ये फैक्टर है ना, बट हमें कुछ दिख नहीं रहा इसमें क्या आपको कैसे. तो आप इस चीज को इसमें इम्प्रूव कीजिएगा, है ना. मतलब मुझे कोई स्टेप्स नहीं दिख रहे कि मुझे किस चीज को कैसे फॉलो करना है. दैट इज ओनली फ्रॉम माय साइड. Okay, sir. Okay, sir. Okay. ओके चलो, थैंक यू. Thank you. Thank you, sir. So now I would like to invite drift velocity table number 012. Good morning everyone. Sir, good afternoon Dillis. We are Vyapar में. What Sir, इंडिया में यूजुअली क्या होता है कि 100 में से ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं. और फेल होने का रीज़न ये है कि फेल होने का मेन रीज़न है कि वहाँ पे लोगों को आइडिया नहीं है कि हम बिजनेस कहाँ पे खोलें और वो लॉन्ग टर्म में हमारा रन करेगा कि नहीं करेगा. मेन इश्यूज आते हैं वो आते हैं कि वहाँ पे डेंसिटी कितनी है, हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वहाँ पे लोकेशन हमारी स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, और वहाँ के रेंट्स क्या है, कितने रेंट है वहाँ का. तो वो सब चीज़ें फिक्स करने के लिए हमने ऐप बनाया है, वेबसाइट बनाई है. सर ये हमारा मेन लेआउट है. यहाँ से हम एंटर एडवाइजर पे जाके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे. यहाँ पे हमने एक एआई ड्रिवन बनाया है जिसमें हम लोकेशन डालते ही, जैसे हम लेट सपोज वैशाली नगर का ले लेते हैं, जयपुर का. हम कोई सा भी बिजनेस टाइप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, शॉप की साइज क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे रेंट डिसाइड, हर लोकेशन का रेंट अलग अलग होता है. हमारा बजट कितना है वो हमें पता होना चाहिए. लेट्स सपोज हमारा बजट 10 लाख का है, तो वो फेच कर रहा है डेटा हम फेच वहाँ से कर रहे हैं एपीआई के थ्रू. बिकॉज ऑफ गूगल मैप का एपीआई थोड़ा सा बिलिंग जनरेट करता है, इस वजह से हमने ओपन मैप्स का एपीआई यूज किया है उस लोकेशन को, एरिया को जनरेट करने के लिए. दूसरी चीज जेमिनाई कीज का यूज किया है ताकि वो डेटा थोड़ा मतलब कि ऑब्जर्व करके दे सके. तीसरी चीज हमने डक गो का यूज किया है ताकि वो रिव्यूज पढ़ के वहाँ के कॉम्पिटिटर्स का डेटा निकाल सके कि वहाँ पे कितने शॉप्स हैं और उनके रिव्यूज क्या क्या हैं. सर बिकॉज ऑफ वो डक गो थोड़ा पुराना इंजन है, वहाँ पे डेटा थोड़ा सा इशूज कर रहा है, इस वजह से वो इसमें शो नहीं हो रहा है. बाकी यहाँ पे मैप एक्सप्लोरर पे हम जाके अपना लोकेशन देख सकते हैं.
सर ये वैशाली नगर में जो भी शॉप्स अवेलेबल है उसका लोकेशन यहाँ पे दे देगा, वहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं वो शो करेगा और हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देगा कि हम क्या चाहते हैं। और वहाँ पे जैसे 1 किलोमीटर के एरिया में हमारे पास 11 कॉम्पिटिटर्स हैं और वहाँ का रेंट कितना है, वहाँ पे हम क्या क्या बिजनेसेस कर सकते हैं वो भी हम बता सकते हैं इससे। तीसरी चीज सर हम इससे पैसा कैसे कमाएंगे, हम 2 चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, हम फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज, बिकॉज ये डेटा अभी रियल डेटा नहीं है, एमवीपीज है, तो फ्रेंचाइजीज के थ्रू हम यहाँ पे अपने फ्रेंचाइजी बेच सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, हमें फ्रेंचाइजीज खरीदनी है, तो फ्रेंचाइजीज हमें कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे, किस रेंट पे, कितने प्राइसेस में मिल जाएंगी वो हमें पता लगाना है। तो हम यहाँ पे जैसे वाओ मॉल के 630 आउटलेट्स अवेलेबल है, तो हम वहाँ से एक अपना आउटलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास कितना बजट लगेगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पे हमने मैजिक ब्रिक्स और 99 एकर्स के थ्रू उस एरिया का रेंट निकाला है, उस एरिया की रेंट कितना है, तो उस हिसाब से हम वहाँ से कमीशन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इट्स गुड प्लान, काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है आपने। कुछ चीज़ें हैं जो आपने दगदग होगा बताया उसमें, तो अब दगदग को आप उसमें हमें नहीं दिखा पा रहे हैं तो हमारी डिसलाइक हो रहा है, तो आइदर डोंट यूज इट, और अगर आप उसको कर रहे हैं तो फुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर डगडग को बस अभी के लिए इसको इम्प्लीमेंटेशन पे था, क्योंकि डगडग को से सर सारा इंडिया का डेटा फेच नहीं होता है, डगडग को बेसिकली चाइना बेस्ड है। तो एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप आज स्टेज पे आए हैं, आप कुछ चीज़ बता रहे हैं, इफ इट्स फ्रूटफुल तो उसको यूज़ करें, अगर फ्रूटफुल नहीं है तो उसको यूज़ नहीं करें। तो अगर आप डगडग से कुछ अभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो इट्स नो गो प्रॉब्लम। सेकेंड इज, आपने जब दिखाया कि जब फाइन बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एवरेज स्क्वायर पर फीट क्या प्राइसिंग था, प्राइसिंग कैसे ले रहे हैं आप? सर वो एवरेज स्क्वायर पर फीट सर प्राइसिंग पर मंथ के हिसाब से डिसाइड हो रही है, पर मंथ के हिसाब से वहाँ का जो एवरेज रेंट चल रहा है वो हम फेच करते हैं। जैसे कि पर स्क्वायर फीट मान लो 73 रुपीज़ है या 80 रुपीज़ है, जब मालवीय नगर में 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, वैशाली नगर में 63 to 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो हाउ दिस इज डेटा जेन्युइन, ये डेटा जेन्युइन कैसे है? आप ओपन मैप से गूगल जेमिनी ऐसे कुछ जैसा जेमिनी कीज यहाँ पे यूज किया, वहाँ का एरिया का रेंट निकालना। बट दिस इज नॉट जेन्युइन ना, ये जेन्युइन डेटा नहीं है। नो सर, बिकॉज़ आपको इसके लिए तो रियल एस्टेट वाले कुछ एप्लीकेशंस करने चाहिए। यस सर, एग्जैक्टली देखिए। यस सर, एपीआई कीज इसमें जो 99 एकर्स वगैरह है उसके थ्रू लगेंगे, जो बिलिंग जनरेट हो रहा था, क्योंकि गूगल का एपीआई थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इस वजह से हमने ओपन मैप राउटर यूज किया है, वरना ये रन कर लेते। थैंक यू सर। Now I would like to call Bug Smasher, table number 023, and they will be joining us online.
Now I would like to invite Nexus expert, table number 031. Now I would like to invite Code X, table number 015. Please come on the stage, guys. Good morning, judges. We are Team Codex, and
Good morning, judges. We are Team Codex, and this is PrepMind AI. PrepMind AI is an interview simulator that works for students that can take real-time interviews through voice interactions and AI and give smart feedback. Like we notice most of the platforms don't feel like real interview pressure, so we build our own system that feel like real interviews. And additionally, prep how it works. So at first, all we need to log in into the account. ठीक है? सबसे पहले यूजर पे account. इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना होगा यूजर का, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आएगा एंड ये इंटरव्यूज सर्विसेज का यूज करेगा. ठीक है. सो फर्स्टली यहाँ पे अपने अकाउंट लॉगिन करा है. ठीक है. सबसे पहले यूजर जो है अपना रिज्यूमे अपलोड करता है इसके अंदर, नाम रिज्यूमे वगैरह, जिससे ए को पता चल जाता है कि बंदा किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसे क्या क्या आता है. तो उसी के बेस पे जो है ए सारी चीज़ पूछेगा. सो यहाँ पे सबसे पहले हम रिज्यूमे अपलोड कर रहे हैं. अंकित के नाम से एक अकाउंट बनाया है. तो सबसे पहले इंटरव्यू करके दिखा रहे हैं. सो इसके अंदर इंटरव्यू में होता ही है कि एआई जो है आपसे 4-5 सवाल पूछेगा. आपको हर एक के आंसर देने होंगे. एक ओरिजिनल एक मतलब जैसे इंटरव्यू मीटिंग होती है उसी की तरह सब कुछ होगा. उसके बाद में आपका कोडिंग टेस्ट भी होगा, जिसके अंदर आपसे मतलब कोडिंग टेस्ट होगा. उसके बाद में जब कोडिंग टेस्ट पास हो जाए तब दोबारा से जो है एआई आपसे सवाल पूछेगा. जैसे यहाँ से एआई सवाल पूछ रहे हैं, जब ये 4-5 सवाल के जवाब दे देगा तब एक कोडिंग टेस्ट होगा, फिर दोबारा सवाल जवाब होगा, फिर दोबारा कोडिंग टेस्ट होगा. इस बाद में जो है आपके रिजल्ट्स आएंगे. उसके अंदर आपको पूरी एनालिसिस मिलेगी कि आपने कैसा इंटरव्यू दिया. आपको पूरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करी जाएगी कि आपने कैसे जवाब करे और कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, एआई के सजेशंस क्या है और पूरी आपने जो है इंटरव्यू कैसा दिया है. तो ये पूरी डिटेल्स जो है आपके सामने आ जाएगी आफ्टर इंटरव्यू. If you have scheduled your interview on this, so is this saved somewhere or it's just wiped out? नहीं, सेव हो रहा है, डेटाबेस में सेव हो रही है. हर एक ट्रांसक्रिप्शन, हर एक चीज़, उसकी जितने भी स्कोर्स है, जैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, टेक्निकल स्किल हो गए, हर एक के ऊपर स्कोरिंग दी जाती है बहुत सारे स्किल्स के ऊपर. Which one is best app during these days which is already companies using for this? There are many existing platforms like HireNet, they have subscription model, we also have, and compared to them, we have cheaper side model and provide more accuracy. First, let me see the feedback after the interview. Now we can see. बंद कर दे इसको. सो यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर एक्चुअली टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं. तो हमने बीच में एक बार रोक दिया इंटरव्यू को. यहाँ पे जैसे इंटरव्यू मतलब पूरा हो जाता है तो ये नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी शेड्यूल अपन यहाँ से कर सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग कब रखी जाए. Just for suggestion, because I am already using 4 or 5 apps for these AI interviews, so add something new in that because very drastically these type of apps are actually using. Like they are saving data, they are analyzing what next question will be coming. So as per the interview, there should be very updated database as well required. So just for suggestion, but yeah, it's very nice. Like it's very good actually. We do have something unique. We have a public leaderboard out there, which will provide you with the scores, like the role you are applying for. According to role wise, you can see a global leaderboard, and on the employer side, you can schedule a meeting to have even a personalized interview selection, like kind of that. We have that. It is kind of a product we are trying to implement. Yeah, it's very nice. एंड मैम यहाँ पे बात करें तो जितने भी इंटरव्यूज है ना वहाँ पे सारे सेव होते हैं. एंड यहाँ पे सारे इंटरव्यूज पेड है, मतलब यूजर को जो है क्रेडिट्स खरीदने होंगे थ्रू रेजर पे पेमेंट के लिए यूज किया हुआ है. तो क्रेडिट खरीद के वो इंटरव्यू दे सकता है.
यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 30 रुपए का पर सेशन है और इतने के 10 आपको सेशन मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी चीप है एंड कॉस्टिंग भी इसकी बढ़िया है, रेजर पेमेंट हो जाती है। तो इसके अंदर जो है सारे के सारे आपके इंटरव्यूज है वो सारे सेव रहते हैं, आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है पर इंटरव्यू एंड कुछ कंबाइंड इंटरव्यूज की भी आपको रिपोर्ट मिलती है। आपको पूरा कैलेंडर मिलता है कि आपने कब कब इंटरव्यूज दिए, कैसे दिए इंटरव्यू, आपने कब कैंसिल कर दिया और आपको काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें पूछना चाहूँगा, जैसे इसमें टाइमर मुझे कहीं नहीं दिखा, इंटरव्यू का टाइमर मुझे नहीं दिखा। एक्चुअली इंटरव्यू के अंदर सीन ऐसा है कि नहीं टाइमर है। टाइमर इस तरह से है कि यूजर को माइक ऑन करना होगा, बोलेगा, जैसे ही वो माइक ऑफ करेगा उसका टाइमर खत्म हो जाएगा। मतलब जब जब माइक ऑन होगा तब तक का वो सारा ट्रांसक्रिप्शन लेगा, माइक ऑफ होते ही एआई के पास उसके सारे जो ट्रांसफर मतलब एनालिसिस है जो भी उसने रिस्पॉन्ड दिया वो सारे एआई के पास जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, इसमें क्या ये वर्क करता है, इसमें आयरस डिटेक्शन एंड टैप चेंजिंग स्विच वाला? और रही बात टैब स्विचिंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से कि टैब स्विचिंग, हाँ तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इंटरव्यू करवा रहे हो टैब स्विचिंग होगा तो कोई भी आपको उस तरीके से इनफैक्ट स्ट्रेट विंडोज में भी आंसर्स कर सकता है। आजकल इंटरव्यूज आप बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इंटरव्यू एआई क्यों बना रहे हैं, ताकि कोई इस चीज़ को लेकर के फास्ट हो सके, काम आप पे देख नहीं सके। तो आप इस चीज़ पे इसमें एडवांस कीजिए। एंड यहाँ पे एक अपना सेकंड बिजनेस मॉडल है जो कि एचआर बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होगा, जितने भी लीडर बोर्ड्स होते हैं कौन मतलब यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, सारी फील्ड के जितने भी यूजर्स हैं सारे के सारे आपको यूजर मिल जाते हैं। मतलब एचआर जो है अपना अकाउंट बना के यूजर को हायर करने के लिए यूजर देख सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, उनकी सारी रिपोर्ट वगैरह आती है। एंड एचआर के अंदर भी जो है क्रेडिट सेशन का है, मतलब बिजनेस मॉडल है ये भी। एंड एचआर को भी पे करना होगा हर यूजर की सारी प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन लाने के लिए। एंड एचआर जो है अपॉइंट कर सकता है यूजर, मतलब कनेक्टेड है एचआर एंड यूजर, अपॉइंट करके उन्हें नेक्स्ट मीटिंग के लिए शेड्यूल कर सकते हैं एचआर कि नेक्स्ट मीटिंग कब लगी है। ऑल्सो डेटा help me. Now I would like to call Nexus expert, table number 031, and they will be joining us online.
Yes, sir. Hello. Hello. Yes. Okay, so good morning and we like to end the last year. So we had one part that our career recovery platform. It is a career path surrender. So we would like to step quickly how we so in the career path we have two questions. So line the identification and speak of the basic element. It's after minutes after. Rishi, can you fix your mic because you are not audible. When you see our screen, sir. So this is the correct. So we have Hello, ma'am, can you hear me? Hello. Yeah, now I can hear. Can you listen us? Hello. Yeah, I can hear you. Can continue because timer is already on actually. हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हमें आवाज आ रही है। Yes, sir. So basically, sir, we are cognitive expert and our project name is AI Recommender. So here we use AI for the task like two students there who are graduate, who are from the class, so want to switch the job. So we are making a project work for this week. So this So it's and on the basis of that the questions we answer them. so we know that also we know there is that we know there. And we answer these questions and on the basis that we suggest us we are what we are to do in the future and what we are not. So we will answer those questions and on the basis of that we give the output of the areas what we have to do and what we have not do. Our last which are so it will suggest will you are So like we suggest for now on the basis of the questions we give the backend developers and overall discussion with the display. The skills we know that we say to these on the basis of that we will analyze skills. it will be that gap that we figure out what to see every. So on the basis of it will learning it will go to learning up and on the basis of that it will just learning roadmap. If you Like this, it will suggest the order of yeah, and on the subject, it will also deal with the people. purchase for the computer for the user.
good scenario, and on the basis of this, we can do affiliate into. ठीक है। और एक बात अगर हमने आपका ये देखा प्रोजेक्ट समझा और मतलब बस मेरे को एक चीज़ यही पूछनी है आपसे कि हाउ इज डिफर फ्रॉम चैट जीपीटी एंड योर्स, मतलब लाइक अगर मैं चैट जीपीटी से बात करूँगा तो वो सारी चीज़ सर्च करेगा विद ऑल द यूआरएल्स, मैं अगर फ्री कोर्स बोलूँगा मुझे फ्री कोर्स देगा, पेड कोर्सेज नहीं देगा, सब कुछ देगा। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वो जो स्टेप किया गया मतलब एग्जांपल जैसे ये कोर्स एक के बारे में ही बात पता है के बारे में नहीं लगता राइट सबको हो सकता है अलग के कॉन्सेप्ट ये गाइस कुछ भी समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है। फर्स्ट आपकी प्रिपरेशन तो ये होनी चाहिए कि आप अपना प्रेजेंटेशन शो करके आपका माइक है स्पीकर आप टेस्ट करके रखें प्रॉपर्ली। आपका आपने जो चीज़ बनाई है दिस इज पार्शियली गुड, अच्छा है, इसमें कई सारे एड ऑन हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ ठीक है, इट्स फाइन। वीडियो में मेमोरी प्लेटफॉर्म भी बन सकता है इसके ओनली वन फीचर्स में ऐड है। ऑलराइट रुचि, ठीक है, तो आपका टाइम भी हो गया है और हमने आपका टॉपिक समझ लिया। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। Now I would like to invite Bring It On, table number 018. Hello everyone and judges, this is me Yashvi Sindani and our app is Restaurant. I'm Niharika and they are Uday and Khushbu. Our app is basically based on application which helps us to find that where the disasters are and they make people identify that how to inform the government that we need help and we need the rescue team. Also it gives the all the information like location, how many people are affected and what is the condition, that it's very severe condition, that if there is flood in Jaipur and some people need rescue, they are stuck, they need food, so they will in our application they will feed all the information and that will act as a bridge. Our application will act as a bridge between government and citizens. So it will give all the information in structured way to the government, so the government provide the rescue team to the people which they are needed. Basically, rescue link is the link between the people and the government. It acts as a bridge between the needy people and the provider. Our application is basically two-way communication. The needy people, the rescue, they will give their information to our application and it will organize it in a good way and send it to the government. Because in the disaster, it is very tough to manage all the area of the affected region. So it will provide government an easy way.
And also our application has a verification system that many people spam things to check the apps and website. So it has a verification system which will see that if the reports are fake or not by number of reports which are registered. That if any disaster or anything has happened, then many reports will be registered. But from a locality, if one or two are there, then it will check the weather forecast and GPS system to track the location and everything. It is a real-time emergency reporting system, real-time incident visualization. As she said, if someone spam the government as a joke that there is a fire in this building or flood occur in Jaipur city, for example. So our application will verify it through the amount of the reports that we are getting from it. And apart from disaster, it also helps us to manage the human-made disasters. Like if there is dispute in the locality or fire or accidents which we need help, like it will connect with volunteers surrounding the areas that can help the people around it. And in disaster, also before sending the rescue teams, it will tell how people by self they can help it. Like they can. If there is threat, they can go to higher areas or something like that. It will provide all the information. And apart from our app, these are such application or website, but our application is different because it has all-in-one things, and these applications have different things. Means one is providing helplines, one is providing tracking things, but our application is providing everything in one only. So it will be helpful. Also, our application has revenue system, which is we are not providing for people. It is completely free for the people, but we can get the revenue from the government. We can take money from every city government, so we can also. So your app is linked to government websites. It is just a prototype. The government can link with us. Like we have just presented an idea to you. This is how it will work. Okay. Like in flood situation or maybe in fire, if somebody phone is switched off or they are not able to connect with this app, so what will be the solution or what will you want to add in this so that somebody else can connect with government compared to that मैम एक्चुअली अगर कोई भी स्टक हुआ है, एक जगह का फ़ोन हो सकता है, एक साथ अगर बंद स्विच ऑफ तो नहीं हो सकता, तो अगर एक जगह स्विच ऑफ करके दूसरी जगह हेल्प कर सकता है. एंड इफ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है, देन देयर इज मैश नेटवर्क विच विल वर्क वाया ब्लूटूथ कनेक्शन. ब्लूटूथ जो रेंज होती है उससे वर्क कर सकता है. और SMS सिस्टम के अगर नेटवर्क नहीं है तो कोई भी डेटा कहीं जाएगा नहीं, सब चीज़ें वहीं पे सेव रहेगी. जैसे ही थोड़ा सा कनेक्शन आता है वो गवर्नमेंट तक को इन्फॉर्मेशन सारी पहुँचा देगा. एंड सैटेलाइट इज ऑल्सो देयर विद पब्लिक पुलिस स्टेशन वगैरह पे सैटेलाइट नेटवर्क भी होता है, सो वहाँ से भी ले सकते हैं.
हेलो आई रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट आप प्लीज जब स्टेज पे आए उससे पहले अपनी प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन को स्प्लिट विंडोज में रखें सो दैट आप बता भी सकें और डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा सकें क्योंकि टाइम कम है ना तो आप प्रॉपर्ली स्प्लिट विंडोज में ला करके डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाते हैं प्रेजेंटेशन भी करते हैं थैंक यू So now I would like to invite the overfitters, table number 019. Hello judges, we are team overfitters and we have created farm guard. इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो, मैं और मेरा दोस्त अमन है, हम दोनों बीमार हो जाते हैं, हमको सेम मेडिसिन चाहिए होती है, सेम मेडिसिन मिल भी जाती है, अमन बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, मेरी हालत और बिगड़ जाती है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अमन की बॉडी मेडिसिन से डिफरेंटली रिएक्ट करती है, मेरी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, दिस इज नोन एज जीन मेटाबॉलिज्म। अब बात करें नंबर्स की, यहाँ पे बात रिकवरी की नहीं है। यूएस में एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इंडिया में हर साल हर डे इंश्योरेंस कंपनी 7 करोड़ रुपए एडीआर और रिलेटेड कॉजेज पे स्पेंड कर रही है। हम सब में 99% लोगों में जीन्स ऐसे जीन वेरिएंट होता है जो एडीआर कॉज कर सकता है। इन एडीआर केसेस में से 50% प्रिवेंटेबल थे। हमारा काम है उनको प्रिवेंट करना। सो वी हैव क्रिएटेड फार्म गार्ड। Let's show you the demo. This is our application, Farm Guard. This is created for hospitals and doctors. So what we do, we get the patient file. हमारे पास patient file होती है, उनमें जीन्स वीन्स सब अवेलेबल होता है। अब हम यहाँ पे कोई भी ड्रग चेक कर सकते हैं, जो उनको वेरीफाई करना है, how will it react with the patient's body. We click on the analysis model, and we have the analysis. तो यहाँ पे 2 ड्रग्स थे, एक ड्रग सेफ है, एक ड्रग में डोजेस एडजस्ट करनी पड़ेगी। Let me tell you how the backend work, how it is working. जब हम BCM फाइल उसको देते हैं, हम पास करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक जेनेटिक फीचर्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप्स, मेटाबोलाइजर स्टेटस। हमारा एक ड्रग बेस्ड इंजन है, रूल बेस्ड इंजन है, CPIC पे बेस्ड। CPIC इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्होंने 20 साल रिसर्च करा है एवरी पॉसिबल ड्रग मेडिसिन इंटरेक्शन पे, जीन मेडिसिन इंटरेक्शन पे। इट इज बैक्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि मेडिसिन वर्क करेगी नहीं करेगी, बिकॉज इन हेल्थ केयर वी कांट प्रेडिक्ट समथिंग। हेल्थ केयर हमारे पास सब चीजों का प्रूफ है, इट इज वेरीफाइड बाय CPIC गाइडलाइंस एंड CPIC मॉडल्स के पास हर जिनका इंटरेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग समथिंग। सब मॉडल अवेलेबल था, डेटा अवेलेबल है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी अननोन आउटपुट्स। तो चांसेस ऑफ एरर, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव्स आर वेरी लेस। हम अगर डॉक्टर्स को सिर्फ वेरीफाई करना है, दिस गाइडलाइन इज ओके, इफ द ड्रग डोजेस शुड बी लो या ड्रग स्क्वाड अगेंस्ट करना चाहिए, वी कैन ऑलवेज क्लिक ऑन द CPIC गाइडलाइन टू। CPIC, that's not our website and the CPIC database, maybe it's missing the issue. The next feature we have, is a pill scanner. Let's start with pill scanner. अभी डॉक्टर्स को डायरेक्टली वेरीफाई करना है, इफ आई एम गिविंग दिस मेडिसिन क्या इफेक्ट होगा, दे कैन ऑलरेडी स्कैनिंग दिस। So it has scanned the medicine name, we have already given the BCF file of the patient, it has said it's safe for the patient, we can go ahead with this. The other features we have is genetic compatibility checker, which can be used for family planning. We can give the BCF files of the parents, mother and father.
And then there's low concern, there's almost no concern. You can check gene by gene what's the probability of the child. Will there be an issue or not? You also have several other features such as safety metrics. डॉक्टर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कौन सा ड्रग कौन से मेटाबॉलिज्म पे सेफ होगा. यू कैन डायरेक्टली चेक, नो नीड टू स्कैन. अब बात करते हैं सर मार्केट की. फार्माकोजेनिक्स मार्केट जो ड्रग जीन इंटरेक्शन पे वर्क करता है $8 बिलियन पे आज. $8 बिलियन. इंडिया में ये मार्केट सिर्फ लैब रिसर्च पे बेस्ड है. Nobody is connecting them with doctors. We are the only team that is in production. We are not in production, but we are planning for production. Government of India has launched several schemes such as Ayushman Digital Bharat scheme, Genome India scheme. Through Ayushman Digital Bharat, government has made hospitals mandatory to integrate third-party APIs with them, जो already हमारे मार्केट ओपन करता है. हमारे टारगेट ऑडियंस हमारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल चेन्स एंड इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी मैंने आपको बताया 7 करोड़ रुपए एनुअल डेली खर्च कर रही है. वी आर आल्सो लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस. And we are already compliant with Ayushman Digital Bharat Mission. We are a sandbox member for that. Once we get the DPDP compliance, digital private data security compliance, we can go ahead with the integration of hospitals. हमारा टारगेट और hospitals है third party integrations and API integrations. Any questions on this? First thing is VCF फाइल कहाँ से आएगी? VCF फाइल सर लैब से ही आती है. Just like होगी आपको पता है आपका ब्लड रिपोर्ट होगी पॉजिटिव that's similar to VCF फाइल. वो रिपोर्ट आपकी VCF फाइल हाँ. लाइक काफ़ी डीप नॉलेज आप लोगों में वो है इसके आप लोग डीप रिसर्च करिए बट स्टिल इट नीड्स टू बी लाइक कंपेयर विद अनदर लाइक कोई कॉम्पिटिटर हो गया कोई ऐसी चीज़ के लिए कोई कॉम्पिटिटर है प्रोडक्शन लेवल पे कोई नहीं है सर. अभी कोई प्रोडक्शन लेवल पे ठीक है. तो देन यू नीड टू अलाइन विद द हॉस्पिटल्स एंड ऑल ताकि आप जो डेटा ला रहे हैं इज इट वेरीफाइड. Yes, we have already contacted with 20 doctors from big hospitals, Vedanta, AIMS and all. They have said it's working. They will obviously not integrate it at this level. So we are trying to collaborate with clinics, small clinics. If you have like reviewed with them to add your testimonials also, so that like जब भी कोई चीज़ देखेगा तो समझेगा कि हाँ this is general आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है. We like that for sure. Alright, thank you. Good job. Very good job. Thank you, sir. Now I would like to call NeuroNest, table number 024. Good morning all and respected judges. So, Team NeuroNest is deriving the system, a project. Like suppose if we think in India, a disaster management like a flood is a very serious problem which causes life problem, losses, infrastructure and property. To overcome this, we do not have the lack of data, but the lack of prediction and analysis which government lack in this system. So, to overcome this, we derive our the program which will help government to predict the flood simulation by giving them safety rule and by predicting the accuracy that the area has the more prone to flood and to evaluate it, we derive ML models so that we can estimate. So if you like, I want to show you the program. So basically, due to the limitations of the area, we selected 3 regions for our chemistry, which are Kerala, Bihar and Assam. As you know, India is a complex region and the chances of occurring flood have the main possibility of only these 3 regions.
done a simulation, you know that the area has been selected by Kerala and the rainfall input which is seen in the bottom is 60 mm, which shows that there is no any prone risk to occur on the flood. And as you show, as I increased the rainfall estimation like by 297, we know the red areas are the more areas where the flood is being occurred. Green areas are the areas where the flood effect is not being shown. And so suppose people are living in the red area are more to lose their jobs and lives. Now, as you know, government lag in this situation like there is no any safe route or path for government to estimate people from one area to another area. So we have added the feature like as you are showing that there is hilltop community hall where people can save their life by going to the location which is across 15 kilometers and have a distance reduction. And for our MVP, the USP, which is known as unique selling proposition, where we have added a feature of resource allocation which is shown on the left hand side. As you can show, ambulances, boat, helicopters, personnel have been allocated. So government don't have these technologies to implement them, and we have the feature so that government and we both can comply with it and have a safe. So if we talk about it as a business model, we have two main customers, primary and secondary. Primary customers are government, so that we can share the data, and secondary customers are like construction sites and insurance companies, for where we can give them data models that this area is more prone to flood area, and they can stop their work or they can resume or further delay. Thank you. So how are you getting this data? Need and allocated. ये data कहाँ से आता है? Basically, sir, we use open value APIs for where we calculate the population of that area, the stations where they are providing the resources, right? We calculate how many hospitals are there in that area. So we estimated like by population and by formula that there are 66% chances of ambulances related. Like basis on hospitals, कितने हैं आपने ambulance का data निकाला? Yeah, by the population and the resource centers are there on that area. ठीक है, all right. Thank you. पानी बोतल लेना है यार, पानी बोतल ले ना इधर के अंदर से दे ना. Now, just for a moment, I would like to interrupt a bit off in the pitching, and I would like to invite our next new esteemed judge, Mr. Shubham Malhotra. He is the Vice President at Barclays. Please come on stage. And I would like to invite Mr. Piyush Sharma sir, Training Placement Officer at Arya College of Engineering and IT, to welcome and felicitate Mr. Shubham sir.
would like to invite the team Bhartiya, table number 026. Hello. Good afternoon, everyone, and respected judges. I am Gaurav from Team Bharti. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि मतलब अपने जब भी पार्किंग स्पॉट ढूंढने जाते हैं, मतलब मान लो कि कोई ड्राइवर है या कार ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, वो डेली ट्रैवल करते हैं। हम उनको ट्रैवलिंग करने के साथ साथ उनको एक पार्किंग भी चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, पार्किंग नियर बाई जो पार्किंग स्लॉट्स होते हैं उनके पास में जाते हैं। वो मान लो सोर्स नहीं मिला उनको पार्किंग के लिए, तो वो नेक्स्ट पार्किंग में जाते हैं। वहाँ भी स्लॉट नहीं मिला तो वो नेक्स्ट में जाते हैं। इससे टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूल वेस्ट भी होता है, फ्यूल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो अगर डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 4000 लीटर एवरीडे फ्यूल वेस्ट हो जाता है ओनली पार्किंग फाइंड करने के लिए। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया स्मार्ट पार्क। ये सर आपको बेसिकली रियल टाइम में जो सोर्स होते हैं ना सर, जो कि आप इस एरिया में खड़े हो, उस एरिया में रियल टाइम सोर्स को दिखाएगा। एक्शन डैशबोर्ड, दिस इज आवर डैशबोर्ड and like we talk about Mumbai Maharashtra zone. This is zone A, zone B, and these are green showing available slots, and red showing occupied slots, and yellow showing reserved slots. You can book these slots by clicking this. Like मान लो कि एक कार है, वो एक जोन में पार्क होती है, तो उसकी बात करेंगे। एक जोन में मल्टीपल कार पार्क चाहिए ना सर, तो सर एक जोन में मल्टीपल सोर्स बता रहे हैं। और लाइक आप यहाँ से सोर्स बुक भी कर सकते हो, मान लो आपको कोई सोर्स खाली दिख रहा है इसमें, बट सर अब बात ये आती है एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है कि सोर्स आपको दिख कैसे रहे हैं एक्चुअली में। सर इसके लिए हमने हार्डवेयर का यूज़ किया रास्पबेरी पाई का, जो पार्किंग में कैमराज लगे होते हैं, ठीक है सर, उस कैमराज के साथ में रास्पबेरी पाई को इंटीग्रेट किया। वो कैमराज कैप्चर करेंगे वहाँ पर सोर्स को, रास्पबेरी पाई पे वो रिस्पॉन्स आएगा, रास्पबेरी पाई ओपन सी के थ्रू प्रोसेस करेगा उसको, देन वो बैकएंड पे रिस्पॉन्स भेजेगा और बैकएंड से फ्रंट एंड पे फिट हो जाएगा। और देन सर हमने हार्डवेयर यहाँ पे पिछली बार जब आए थे तब इम्प्लीमेंट किया था, बिकॉज सर अभी प्रॉपर कनेक्शन नहीं इसलिए नहीं कर पाए थे। ये प्रॉपर सर हार्डवेयर इम्प्लीमेंट किया था और ये सर कैलिब्रेशन इमेज लिए हमने कि जो सोर्स खाली थे उनको दिखाई है, और बाकी सर डैशबोर्ड पर चेंजेस जो हो रहे थे वो दिखाए हैं। प्रॉपर सर एनालिटिक्स सब दिखाया हुआ कि कौन से सोर्स खाली है कौन से नहीं है, और आप इनको बुक भी कर सकते हो मतलब वहाँ बैठे बैठे। और सर ये ड्राइवर के लिए भी कन्वीनियंट है, कुछ ड्राइवर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके लिए सर हमने माइक्रो ऑप्शन भी दिया हुआ है डैशबोर्ड पे। सिर्फ माइक्रो ऑप्शन दिया हुआ है और साथ में आप एक कॉलिंग एजेंट भी हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप मतलब कॉल के थ्रू बुक भी कर सकते हो उस चीज़ को, जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं। बेसिकली हमारा मतलब ये सर बेसिकली डेमो है, और जब लार्ज लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें सर थोड़ी बहुत कॉस्ट भी लगेगी, क्योंकि सर स्टार्टिंग में हम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे कुछ हार्डवेयर की कॉस्ट लगेगी, तो वो वन टाइम कॉस्ट होती है। उसके बाद में हम एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो हर मंथ का चार्जेज होगा इसका। रिसेंटली इंडिया में सेम प्रोजेक्ट पर एक कंपनी काम कर रही है, उसका नाम मालूम है आपको? अभी हम जो जज आए थे पहले कबाड़ पार्ट से जज आए थे, उन्होंने बताया था कि वो भी पहले काम कर चुके हैं सिमिलर प्रोजेक्ट पे, बट उन्होंने बताया कि जैसे रियल टाइम डेटा शो हो रहा है इसके ऊपर। अब मान लो कोई इंसान इस वेबसाइट पे नहीं जाता, आई एम आस्किंग अभी करेंटली सिमिलर टाइम, आई एम नॉट जस्ट सेइंग एग्जैक्टली सिमिलर टाइम के प्रोजेक्ट में एक कंपनी ने फंडिंग उठाई है और जयपुर में वो इम्प्लीमेंटेड भी है बहुत जगह। उस कंपनी का नाम मालूम है आपकी टीम में से? नाम मालूम नहीं, बट कंपनी है मुझे पता है। जस्ट टेक Part-1 वो जयपुर से ही है, और वो उन्होंने सिमिलर टाइप का ही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है। और बट मैम इसमें यूनिकनेस बता रहा हूँ आपको क्या है, जैसे मान लो कि कोई इंसान हमारी पार्किंग मतलब इस ऐप से नहीं जाता है। No, I'm saying it's very good that you reach at that level because they are at very high level, but at the college level you implemented it. So if you get chance, please connect with them, and I really appreciate that you think at that level. एक चीज़ और, जैसे मतलब मान लो मैं पार्किंग में जाते हैं, मॉल की पार्किंग में जाते हैं, वो सिर्फ काटने वाले खड़े होते हैं,
और मैम उन पर क्या होता है कि मतलब वो मैम अपने स्कैनर पेमेंट करवा देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उनसे मैम जो पार्किंग ऑनर्स का लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सोचा ये चीज़ कि मैम जैसे मान लो कोई पार्किंग स्लॉट अवेलेबल पड़ा है, अब उसमें कार जब आएगी पार्क होने के लिए, कार पार्क होती है तो एक मैम डिवाइडर होगा तो अप हो जाएगा, तो कार को अप कर देगा प्रॉपर्ली, जिससे कार बाहर नहीं जा सकती है। जब तक देन जितने टाइम वो कार खड़ी रहेगी उसके अंदर उसका बिल बनता रहेगा कार की पार्किंग के लिए। देन जैसे ही मतलब इंसान का काम पूरा हो जाएगा, जब बाहर आएगा हम एक बूथ लगाएंगे स्कैनर के लिए, उसका पेमेंट करेगा, देन वो डाउन हो जाएगा। अच्छा, ये पार्किंग जो पहले है कहीं की मुंबई नहीं सर, अभी ना सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के स्पेसिफिक जोन पे दी हुई है सर। कैसा जोन को मैं लोकेशन समझूं, लोकेशन कहाँ है एग्जैक्ट? सर ये नियर मतलब ना आपके नियर बाई जो जोन होते हैं ना, मतलब मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो बस वहाँ पे स्पेसिफिक जोन बने हुए हैं अलग अलग लोकेशन। जोन्स बहुत बड़े होते हैं, आप सिर्फ जोन ही बता रहे हो? हाँ सर, ये हमारा प्रोटोटाइप वर्जन है, इसके सिर्फ जोन्स के लिए हमने सिर्फ स्मॉल लोकेशन दिखाई है, और सर हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया था कि जैसे हमने 4 जोन्स लिए थे ना सर, 4 जोन्स लिए थे, उसको हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया था कि आपने यहाँ पे कार पार्क करिए तो आपको दिखाएगा यहाँ पे डैशबोर्ड में करके कि वो आप ऑक्यूपाइड हो चुका है या रिजर्व भी कर सकते हैं उसको। आपने टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ करी है? सर फ्रंट एंड के लिए हमने सर React.js का यूज़ किया, और बाकी सर रियल टाइम शो करने के लिए सॉकेट्स का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि सॉकेट्स की जैसे वर्कशॉप में अपने चैटिंग करते हैं वो रियल टाइम में चैटिंग शो होती है, सॉकेट्स का यूज़ किया सर। और बैक एंड के लिए सर Express.js का यूज़ किया है, और सर क्या मॉडल ट्रेन करने के लिए सर ओपन सी कुछ मॉडल ट्रेन किया सर ने। और एक चीज़ और है सर कि हमने जो उसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ किए हैं सर, प्रोटोकॉल सर अभी फिलहाल HTTP यूज़ किया है, बट अगर अपने थोड़ा लार्ज लेवल पे जाएंगे तो MQTT यूज़ करना पड़ेगा, अपने मैसेज के टाइम में ट्रांसफर यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली जो हमने हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन किया है ना, वी हैव यूज्ड रास्पबेरी पाई 4B मॉडल एंड वी हैव यूज्ड रास्पबेरी पाई कैम RET 1.3. In phase 1 this is a demo product, right? In phase 2 we can improve by using Jetson Nano, and we can also use ANPR cameras to detect vehicle is registered or not. No, basically you're taking a picture Right. and then you are doing the machine learning. Right, we are only doing for training our model. Yeah, you have a model, right? Which is trained. Yeah. Okay. We are using YOLO-V model which detects vehicle, and ANPR cameras that detects number plate and register on our web. Okay. And No, server, basically you have a camera. right? You take the picture of parking slot. Right. You analyze, you decode it, you analyze whether it's free or not. Right? And then you show on the UI. Correct? कैमरा यूज़ करते हैं सर, ANPR कैमरा यूज़ करते हैं सर, जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन करते हैं। Okay. जैसे तो पार्किंग से यूज़ करते हैं मोस्टली, नॉर्मल कैमरा यूज़ करते हैं, उसके साथ में रेस्ट रहते हैं। तो जहाँ पे भी मतलब wherever it will be implemented, you do this like the physical setup needs to be done, and then this will get. सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद में सर ये And do you have like the end customer would need an app or something to? So do you have an app ready? Can I also install it? Can I install that? No, it's not into. It's like, only market. web app, sir. You can use it on your phone web app. Okay. Sir, also we have AI actions in it. Yeah. Just one. So what is this feature is AI prediction. Suppose एक particular time period के like weekends पे 6 जैसे 4 to 5 PM पीक टाइम है, उस समय पार्किंग स्लॉट्स जैसे ट्रैफिक खूब जाता है, तो उस समय हमारी जो वेब ऐप होगी वो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्राइस इंक्रीज कर देगी। जैसे ओपन फ्लोर की हुई एरिया सर, वो आपको सजेशंस भी देगी, मतलब जो आपका करंट पार्किंग है उसमें जो ऑक्यूपेंसी हो रखी है उसके बेसिस सजेशन देगी आपको कि आपको हैंडीकैप को मतलब उसकी आपकी जो ओपन रहनी चाहिए, ईवी के लिए ओपन रहना चाहिए आपको कुछ। Perfect. Very good. Thanks. Now I would like to invite Neuro Ninja, table number 092.
and they will be connecting us online. Anyway, this is so our talk. So our हमारा जो टॉपिक था वो था AI based traffic smart ticketing system. So the problem statement was okay. So basically the problem is जब बहुत बार क्रिटिकली ट्रैफिक एरिया में इंजेक्शन हो जाता है, कोई बात नहीं मिलता वहाँ से जाने के लिए और ना ही प्रेडिक्शन हो पा रहा है तो जल्दी वहाँ से जाने के लिए वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि 10 मिनट नियर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट सिस्टम बनाया है। इसके बेसिकली हमने ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाया जिसमें 3 चीजें इंटीग्रेटेड होगी। सबसे पहले IoT यूज करा है, सबसे पहले हमने उसमें IoT यूज करा है जिसका काम होगा हर IoT डिवाइस लगा होगा जिसका मेन काम होगा कि वो कितनी वहाँ पे चीजें लगी हो उसको रीड करना। देन उसका काम होगा कि रीड करें व्हीकल्स की स्पीड, दूसरा वो रीड करेगा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कितना है व्हीकल्स का, ताकि हम प्रेडिक्ट पता कर पाए कि वहाँ पे कितना कंजप्शन ट्रैफिक है। दूसरा हमारा टास्क रहेगा उसी डेटा को कलेक्ट करके क्लाउड में स्टोर करेगा मोबाइल डेटाबेस में, जहाँ पर वो उस डेटा को हम रीड करेंगे और AI मॉडल बनाएंगे ताकि वो पिक कर पाए तो 10 मिनट के अंदर उस एरिया में कितना ट्रैफिक कंजेस्टेड रहेगा और कितना, और उसी को हम इंटरफेस बैकएंड इंटरफेस पे शो करके यूज करते हैं ताकि हमें पता सामने जो यूजर है उसको पता चल सके कि कितना ट्रैफिक रहेगा और हम एक स्पेसिफाइड पाथ प्रोवाइड करेंगे वो कहीं जाना चाहता है क्या है। और अगर हम बात करें कि तो कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है तो टेक्नोलॉजी के तौर पर 3 चीजें यूज हो रही है। IoT यूज कर रहे हैं, हम AI यूज कर रहे हैं और तीसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर रहे हैं। IoT के तौर पर हम ESP32 करके ताकि हम वाईफाई ब्लूटूथ को साथ में लिंक कर सके। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम ESP22 का यूज करेंगे, सेंसर यूज करेंगे ताकि हम इतनी वहाँ से पास हमको एरिया पता कर सकें। दूसरा AI मॉडल के तौर पे यूज करेंगे ताकि हम पता कर सके बहुत सारे लेबल्स के ऊपर से ट्रेन कर सके, उसे प्रेडिक्ट ऑन रियल टाइम करवा सके। तीसरा बैकएंड के तौर पे नोड.js और मोंगो यूज करते हैं। नोड.js बैकएंड में API को यूज करने के लिए यूज होगा और मोंगो डेटा स्टोर करने जिस पे हम रेंडर फर्स्ट करेंगे। फ्रंट एंड के तौर पर बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बूटस्ट्रैप यूज होगा और GPS सेंसर्स यूज होंगे ताकि रियल टाइम डेटा पर्सन का ले पाए वो यूज करना रहता है हमारी एप्लीकेशन।
ठीक है सर, थैंक यू। Okay, so hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, sir, you're on. Okay, great. Yes, sir, you are on. So just help me to understand, like in real life use case, if I'm going from a point A to point B, I would simply open the Google map and see like, where the destination is and what is the optimal route for me to go, right? How will this application will help me? Sir, but in the Google Map, Sir, in our project, we include an AI which will help when on the traffic signals. It has control with AI when more traffic on one road, and will control with AI and it opens traffic light initially in less time, so traffic goes fluently with no traffic. Sorry, I think I didn't get it. We didn't get it, sorry. Yeah, I mean, sorry, just one second. My question is very simple. Like in real life use case, we take either Google Map or Apple Map, right? Anything that to see where the traffic is, what is the best possible route. Can you please repeat? Yeah, can you hear me? Is it audible? so basically Google Map doesn't have the ability to predict the after 15 or 20 minutes of their traffic, which is included in our system using AI. Okay, no worries, yeah, thanks. Now I would like to invite Code Monk, table number 095. And they will be joining us online.
Hello everyone. Am I audible? Okay. So first of all, I'll share my screen. Is it visible to you? Hello. Okay. So our good afternoon to all of you. My name is and our name is code now. So basically, we're working on a for AI and integration. So we are building project on the basis of finding person security. So this is the portal, like there there is user and the information regarding the person. So first we enter the information like suppose my his current is like 22 and on the basis of last few we got like we enter the description also. So, and uploading the pictures like he is the person who are missing. Like, okay. So after that there is the missing person. So there is an active alert will be on to the new portal. Active case on the basis of these are the active cases which are right now. So on the like we are working on a real time basis on the basis. So generally we have to focus more about the CCTV response streaming. Like suppose there is a live camera. Suppose I click on start camera. Like I am the one who are receiving. So after clicking on processing, so it will basically scan the basis of the processing. Like and the photo will be given into the upload. Like these are the methods will be found on the basis of we are using the and CCTV stuff like as you know CCTV is not public so we are using free real-time systems and these are the records will be found on the basis of that. If the policy is allowed, then we can use that screen and on the basis of the searching will be found. The information will be given to the user. These person are missing. And the model is like AceNet, AI model is working like giving the access to of is the higher chances for not missing, matching the result. So and after generating result like 97% is shown here, like the active alert is shown in the active filter. Like generally the problem is basically simple like we are using the FaceNet model installed in our system. Another model like we are using multiple models finding the missing person. So if there is a we add a feature like updated step also providing if someone find the user that he or she will get it if on the basis of that finding the user. So, this is the like suppose these are the person taking portal. Hello?
हाँ हाँ, आ रही है। आप जो अभी सिस्टम सोर्स यूज कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके सिस्टम सोर्स की वजह से कुछ कंप्यूटेशन सर इनको बहुत आ रहा है सर आपको। ओके, अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आवाज ठीक है? हेलो अभी आवाज सही आ रही है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको, इनको आ रहा है। हाँ हाँ आपकी आ रही है। जी जी ओके ओके so you are asking about the how the this application is if this application is like how they help to the real user, right? This is your question, right? Okay, so I already told you this is the multi-model supported system. Like we are building a really scalable system. Like suppose if we are providing to the real user, then we use the real streaming on the real streaming, like it will be provided to us. If we make this application to live, then we are using the live streaming. Currently, we are using the free streaming. So just one thing is like we are using URL of streaming on the rest of the streaming. And it will be multi-model thing also. Like currently, we are using one model, like basically behind the scene, face net model working. But we can make it like multiple model like R-face, inside face. These are the models we are working for detecting face from images. Like okay. Okay. Now I would like to invite refixers, table number 032. Refixers.
Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, judges. Good afternoon, everyone. And first of all, thanks for giving one more opportunity to present my project over here. So, my name is Founder Bhartadas Gaga from Sri Saram Engineering College, Chennai. So, under open innovation, the problem statement I choose is air pollution. So, we all know that air pollution is a silent killer. Around 8.8 million people are dying only due to air pollution. 8 billion people are suffering due to air pollution. Global death rate, 4% of global death rate are caused due to air pollution, COPD. Around 10 lakh people in India, premature children are dying only due to air pollution. So, in search of solution for that, what I have found is, first is mask, and the second one is bulkier air purifier. But both has a major drawbacks. When a person uses mask, he don't know when to use, where to use. अगर समझो कि मैंने मास्क पहन लिया तो मेरे को इसमें बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। पहली तो मेरे को पता नहीं है कि पोल्यूशन कब है, किधर पहनना है, एंड दूसरी बात मेरे को इरिटेशन होती है, स्वेट वगैरह सब। दूसरा बल्कियर एयर प्यूरिफायर्स, वो मॉल्स पे, थिएटर्स पे उधर यूज होते हैं, पर एक इंडिविजुअल जब बाहर जाता है, घूमने जाता है, तो वो पोल्यूशन से डायरेक्ट एक्सपोज होता है, तो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये दोनों को मिलाकर मतलब इस गैप को ब्रिज करने के लिए मैं लाया हूँ एरिगो एयरगैप प्रो, रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर। तो ये मेरा एयर प्यूरिफायर है, जो मतलब अपने हाथ में या वेस्ट में हम लोग वेयर कर सकते हैं। वेयर करने के बाद बस ऐसे जा सकते हैं। ये सिस्टम क्या करेगा, रियल टाइम में पोल्यूशन को मॉनिटर करेगा। अगर पोल्यूशन लेवल मेरा हाई हो गया तो ये मेरे को इंटीमेट करेगा, एंड इसके अंदर 3 स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है। वो फिल्टर्स मेरे को फिल्टर करके थ्रू मास्क जो मैंने इसमें कलेक्ट किया है उसमें से देंगे मेरे को। नो सर, इट्स एक्चुअली So we need to wear this in our hand, on our wrist. So this prototype will continuously monitors the pollution level, and then if the pollution rises above 50, then my motors will start. And I have installed 2 motors, coilless motor. एक तो pollution को inlet सब करने के लिए और दूसरा purified air को मेरे को provide करने के लिए. And yes sir. बस इस सिस्टम को ऐसा हम लोग हाथ में मतलब वेयर कर लेने का है। पोल्यूशन कंटिन्यूसली मॉनिटर होते रहेगा। इसके अंदर के पोल्यूशन फिल्टर्स अभी इस सिस्टम के अंदर वो 3 स्टेजेस ऑफ फिल्टरेशन सिस्टम प्रोवाइडेड है। एक तो है हेपाटो फिल्टर, दूसरा एक्टिवेटेड चारकोल चिप्स, एंड तीसरा है प्री फिल्टर्स। एक्चुअली एयर पोल्यूशन में मेजर रोल प्ले करता है PM2.5 एंड PM10, जिसका साइज 0.3 माइक्रोन लेवल है। हम लोग के ब्लड वेसल्स में इजीली पेनिट्रेट होकर चले जाते हैं। हमारे हायर से 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं सर वो। यस सर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी मतलब फिल्टर का भी एफिशिएंसी कम हो जाएगा। वो यूजर्स को पता होना चाहिए कि कब फिल्टर रिप्लेस करना है, कब नहीं करना है। इसके लिए मैंने इनलेट पोल्यूशन चेक करने के लिए मैंने सेंसर्स लगाए, आउटलेट पोल्यूशन चेक करने के लिए सेंसर्स लगाए। जब दोनों का वैल्यू सिमिलर होगा तो मेरे को यूजर को नोटिफाई आएगा कि बाबा पोल्यूशन मतलब फिल्टर का एफिशिएंसी कम हो गया, आप फिल्टर रिप्लेस कर दो। ओके, अगर समझो कि मेरा पोल्यूशन लेवल राइज हो गया, अभी मेरे को वो मास्क पहनने का यूजर को नोटिफिकेशन कॉल से होगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं।
टेस्ट कॉल का फीचर है, अगर मैं मैनुअली मतलब मेरा नंबर देता हूँ जो कि मेरे उसमें से डेटा है मेरे फाइल में कंटिन्यू यस अभी मेरा लेटेस्ट सेटिंग 55 है एंड आई विल गेट so I have recorded you but I work so boss status होता है yes sir and what is this for connecting to my lab बस सुन का सकता हूँ any competitor for this device any competitor for this device currently market no अभी तक जितने भी डिवाइसेस हैं सिर्फ एक रूम के लिए बनाया है पोर्टेबल बनाया है उन्होंने पर रूम के लिए बनाया है एवरी इंडिविजुअल के लिए अभी तक कौन सा डिवाइस how much surrounding it is covered per person like if I'm wearing surrounding around 2 meters now because I am just developing this for an individual so 2 meters is more than enough it's nice solution thank you ma'am and for business model I have integrated the NGO part also अगर समझो मेरे को इसमें से बिजनेस मॉडल बनाना है तो मैं क्या करूँगा अभी समझो कि मैंने अगर मेरा एनजीओ है स्पेसिफिकली महाराष्ट्र जयपुर उन्होंने मतलब रजिस्टर करके रखा है उनको एनजीओ मोस्टली क्या करते हैं कि मतलब वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं वो लोग तो मैं क्या करूँगा कि बाबा ये जगह पे स्पेसिफिकली PM 2.5 या PM10 CO2 इसका वैल्यूज ज़्यादा है इसे रिड्यूस करने के लिए बस आपको काम करना चाहिए अगर वो एनजीओ नया है उन्हें नहीं पता कि बाबा मतलब क्या करने से वो कम होगा तो मेरा सेपरेट सेलुलम भी मतलब इधर कनेक्टेड है एआई चैटबॉट तो वो लोग बस इनसे पूछेंगे कि मेरे को क्या करने से वो कम होगा और मेरा स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए तो ये पूरा स्ट्रैटेजी बताएगा अगर उस एनजीओ को पूरा स्टेट पूरा इंडिया का मतलब एक ही वैल्यूएशन हाँ यार श्योर सॉरी and the complete prototype weight around yes completely weight during hackathon 14 and 15 मैंने इसे इधर बनाया and उधर लेकिन चेन्नई गया वापस इसको थोड़ा रीडिफाइन किया और वापस करा yes completely made by and the last time मैंने मतलब बनाया था तो उन्होंने बोला इसका साइज थोड़ा बड़ा है और छोटा कर सकते हो तो इसके लिए ये वाला सर तो इसमें मैंने ESP32 यूज किया है ये स्पीड मॉड्यूल है ओके जो सिर्फ बहुत कम पिन का यूज होता है एंड ये पिन को यूज करके मैं इसे और छोटा बना सकता हूँ okay completely solved I think this is something which is really like it defines the innovation I wanted to see this like deserves a lot of respect you did really good work what's your good name Bharti Raja sir Bharti Rajesh you're from Chennai yes sir. You traveled from Chennai yes sir. wow आज सुबह आ गए थे great guys round of applause for this guy he made something which is really blowing my mind so thanks a lot yeah any suggestions sir कि इसे और कोई स्टफ क्रिएट चलेगा सर श्योर सर Now I would like to call Universe 7, table number 034. Guys, be fast.